Hi friends, welcome to Samir Academy. And without wasting times, I start chemistry. After completion of chemistry, I will provide physics and biology back to back, and also simultaneously polity. After completion of polity, history and geography will be provided. So we start chemistry. Chemistry is the branch of science. The branch of science which deals with matter. We deals with matter. What is matter? Matter is some having some mass and occupy some space. ଯାହାର କିଛି mass ଥିବ ଆଉ କିଛି space occupy କରୁଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର matter. Okay. According to matter will classify into two parts. according to constitutions ମାନେ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ. ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେମିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍. Matter can be classified into physical and chemical classification. What is physical classification? And we go through separately. Physical, we know physical classification is solid, liquid and gas. Chemical classification also classified into two parts. Pure substance and mixture. Okay. Solid, we know solid, liquid, gas. Solid जोटा आमर कठिन, liquid तरल, gas जोटा gaseous, and pure substance mixture. Pure substance further classified in two parts. One is elements and another is compound. Okay guys, one is element, another is compound, and mixture also classified into two parts. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, finally then again compound will also classify into two parts. Compounds, one is inorganic, another is organic compound. Okay, finally I talk again. Chemistry science, the science which is related to by study of matter is known as chemistry. What is matter? Substance which having some mass and occupy some space. Okay, again classified matter classify कले आम दी भाग क्लासिफिकेशन करुचे. गोटे हूँ फिजिकल क्लासिफिकेशन, गोटे हूँ केमिकल क्लासिफिकेशन. व्हाट इज फिजिकल एंड अगेन फिजिकल क्लासिफिकेशन रोचे जोटा आम बाह्य माने बाहर देखी पारे जो क्लासिफिकेशन मान जानी पारे यहाँ गोटे तार एक्जिस्ट अच्छी. तो यहाँ हूँ solid, liquid, gas, physical classification, and chemical also divided in two parts, pure substance and mixture. Pure substance means it also further divided in two parts, two category, elements and compound, and mixture also classified into homogeneous and heterogeneous mixture. Okay, again further compounds are classified in inorganic and organic. Okay, first आमे धीरे धीरे गोटे पर गोटे जीवा. व्हाट इज एलिमेंट? सॉलिड आम जाने समस्त जोटा आम कठिन से सॉलिड, लिक्विड कहली. ओके, आम ये देखा एलिमेंट्स टू. ओके, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट कहले एलिमेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन नेदर बी ब्रोकन नॉर बिल्ड फ्रॉम टू और मोर सिंपल सब्सटेंस. तार कौन है बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड जोटा कि आम कहले एलिमेंट्स माने प्योर सब्सटेंस, केवल प्योर एलिमेंट. और आम कहले एग्जांपल फॉर एग्जांपल आम देले आयरन नेले, सोडियम. तो आयरन माने ओनली आयरन आर प्रेजेंट, दैट इज एलिमेंट्स. माने एटा गोटे एलिमेंट जोटा केवल आयरन ही थिबो, एटा आम कह आयरन एलिमेंट कहबा. सोडियम एलिमेंट थिबो. तो से कहला कि दीटा माने अलग अलग जिनस मिसले गोटे एलिमेंट हेनी. माने सोडियम आयरन मिसिक एमती गोटे एलिमेंट हेनी. तो एलिमेंट केवल गोटे ही जिनस मिसता जोटा कि आयरन, which contains only one kind of atom, केवल only one kind of atom, that is either for example iron or sodium.
Okay, types of element also classified 1 2 3 metal, non-metal and metalloid. What is metal? मैं टिके जस्ट सिंपल कर मेटाल कौन एक्चुअल देख मेटाल हूँ आम धातु धातु आम क्या कहवा धातु जोटा आम चिकन लगे नमणीय तार हो पार तार हो पार फॉर एग्जांपल जोटा आम चिकन लगे तो अर्थात सुना रूपा कपर इटीसी तो नॉर्मल जोटा आमको चिकन लगे सहीटा हूँ धातु प्राय माने एवरेज देखिले प्राय जोटा आमर मेटाल माने सुना रूपा ये प्राय एगुरा मेटाल नॉन मेटाल्स है प्राय सब आमर गैस आसो भारी गैस माने कार्बन कौन ऑक्सीजन से आम नॉन मेटाल और धातु आ मेटालॉइड्स है जोटा बोथ मेटाल एंड नॉन मेटाल कैरेक्टर ऑक्युपाई कर मेटाल एंड नॉन मेटाल्स okay guys then we go to another phase and I'm going to metal okay then compound okay what is compound a compound is a substance which contains more than one kind of atoms or element in a fixed proportion the first compound means man fixed proportion what is fixed proportion এটা হচ্ছে কম্বিনেশন অফ টু মনে কর এটা গোটে এলিমেন্ট প্লস এলিমেন্ট compound এটা element or atom the element more than one two or more than elements would provide a compound in a fixed ratio माने particular a ratio रे particular ratio for example आमर आसीबो वाटर H2O 1:8 तो H2O 1:8 मिसला पर सेटा वाटर हम यहाँ सब बेले फिक्स तो से आमर कहूँ पर्टिकुलारली फिक्स्ड प्रोपोर्शन फॉर एग्जांपल NaCl H2SO4 तो से एग्जांपल ऑफ कंपाउंड टाइप ऑफ कंपाउंड कौन कहला टाइप ऑफ कंपाउंड कहला पढ़ी आम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दुई हूँ आमर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक विथ कार्बन एटम इनऑर्गेनिक विदाउट कार्बन एटम guys clear then go to mixture 2 3 house mixture what is mixture देखो कंपाउंड है फिक्स्ड रेशियो रे दुईटा एलिमेंट बा दुईटा एटम मिसले गोटे जिनस करबे एटा कंपाउंड फिक्स्ड रेशियो किंतु मिक्सचर है मोर देन टू एलिमेंट्स मिसिबे मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड बट इन रैंडमली proportion by any disorder proportion not a fixed ratio a material definition होची a material contain two or more elements तो a material दीटा elements बा तीनटा जहाँ भी हो मिसिकी यहाँ हूँ आमर कौन करें मिक्सचर कले ओके एलिमेंट और एटम सेम एलिमेंट और एटम जहाँ गले किंतु ये विदाउट फिक्स्ड रेशियो without fixed ratio बा proper ratio तार्थ randomly कि एमती किसी ना किए क्या सहित केते मिसिबो बुझेला इनटू जोथा माने एग्जांपल एयर द मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस एठी हमर ऑक्सीजन अछि नाइट्रोजन अछि कार्बन डाइऑक्साइड अछि
argon अच्छी एक्सेट्रा ऑल गैसेस आर प्रोवाइडेड बट डेफिनाइट नॉट डेफिनाइट प्रोसेस माने डेफिनाइटली प्रोपोर्शन देन टाइप्स ऑफ मिक्सचर कहूँ होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर व्हाट इज होमोजेनियस होमो माने सिमिलर एलिमेंट गाइस क्लियर हेटेरो माने डिफरेंट ओके फाइनली homogeneous mixture the mixture which occupies similar component that is homogeneous mixture heterogeneous mixture that different elements a mixture is said to be homogeneous if its composition is uniform throughout माने uniform देवा similar थिबो हैला तार heterogeneous होजी not uniform but different okay guys clear a property of mixture are the properties of constitution a mixture is गोटे पॉइंट हो नोट करदे a mixture with definitely boiled point is known as azeotropic mixture क्या कहबा हमें azeotropic mixture कहले a mixture with definite boiling point जो मिक्सचर डेफिनाइटली बॉइलिंग पॉइंट थी ताको आम आजिओट्रोपिक मिक्सचर बोली कहबा ओके तार आम आस सेपारेशन ऑफ मिक्सचर माने को प्रोसेस रे बा किभली को प्रणाली आम गोटे मिक्सचर को सेपारेट कर पारुछ माने तार एलिमेंट काढ़ी पारिबा सेटा होची सेपारेशन ऑफ मिक्सचर्स फास्ट आम देखिबा सब्लिमेशन देख सब्लिमेशन कहूँ कि इट इज द प्रोसेस सॉलिड सब्सटेंस पासेस डायरेक्टली गोटे सॉलिड ये सॉलिड तो सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर जो प्रोसेस रे सॉलिडटा डायरेक्ट वेपर हो जिवो सेही प्रोसेसटा सब्लिमेशन एई प्रोसेसटा होची सब्लिमेशन एग्जांपल आयोडीन नाफ्थालिन बेंजोइक एसिड खाली जानवा दरकार सब्लिमेशन क्या कहबा सॉलिडटा डायरेक्ट वेपर हो तो यहाँ हूँ सब्लिमेशन दुई सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन यहाँ कौन देखा दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन एंड कंपाउंड इज लिक्विड एंड अदर इज इनसॉल्युबल सॉलिड देखो गोटे कहूँ से ये आम यहाँ को प्रोसेस गोटे थी कंपोनेंट वन कंपोनेंट मिक्सचर माने कौन मोर देन वन कंपोनेंट तो गोटे कंपोनेंट हूँ लिक्विड गोटे हूँ आमर लिक्विड रोचे है गोटे लिक्विड रोचे एंड अदर इज इनसॉल्युबल आ गोटे हूँ इनसॉल्युबल सॉलिड गाइस क्लियर सेडिमेंटेशन डिकैंटेशन हूँ आम जाने कौन मिक्सचर हूँ मोर देन वन और टू एलिमेंट्स कंपोनेंट्स तो गोटे कंपोनेंट हूँ लिक्विड आम रहा गोटे कंपोनेंट जोटा इनसॉल्युबल सॉलिड जोटा कि पानी सहित लिक्विड सहित सॉल्युबल हो पार इनसॉल्युबल ताको आम कौ प्रोसेस माने सेपारेट करे सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन थर्ड प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन से कहला कि जिते बेले दीटा जिनसर माने दीटा कंपोनेंट अलग अलग सॉल्युबिलिटी थी दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द वेरियस कंपोनेंट इन ए सॉल्वेंट एग्जांपल कहते KNO3 प्लस NaCl एमानकर सॉल्युबिलिटी माने से सॉल्युबल हे माने ये आग सॉल्युबल होते तो से प्रोसेस पछे सॉल्युबल तो यहाँ हूँ आम सॉल्युबिलिटी एमान डिफरेंट सॉल्युबिलिटी अच्छी तो जो दीटा एलिमेंट डिफरेंस दीटा
सल्युबिलिटी अलग थी से माने डिफरेंट माने को प्रोसेस अलग है आम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस रे क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस फॉर हुई माने जो प्रोसेस रे आम डिफरेंस इन सल्युबिलिटी जो दुटा एलिमेंट बा जो दुटा कंपोनेंट डिफरेंस इन सल्युबिलिटी थी ताको आम यही प्रोसेस रे डिफरेंट करवा फोर आसला फिल्टरेशन फिल्टरेशन कौन सेमि फिल्टरेशन माने फिल्टर करिया माने छाणीबा आमे छाणीबा काहाकू मन गोटे लिक्विड अच्छी हाँ लिक्विड अच्छे गोटे सॉलिड अच्छी पाखापाखि आस तो सामान तो लिक्विड अच्छी सॉलिड आम छाणी दौचे माने पानी पके छाणीदे यहाँ हूँ वन कंपोनेंट लिक्विड अनदर इज सॉलिड it is quick and complete just sanction complete removal of solid suspense particularly from a liquid by passing a substance through a filter माने रहिला गोटे फिल्टर ये कौन रहा ये गोटे फिल्टर पेपर पकईदे ये आम जो मन कर गोटे ढाड़े ये आम ढाड़ा तो ये कौन लिक्विड मिसी सहित सॉलिड मिसिक अच्छी सॉलिड तो यही आमर कौन फिल्टर पेपर यहाँ हूँ फिल्टर पेपर ये सॉलिड ये रही लिक्विड आमर ये पड़े आस द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम लिक्विड डिफरेंट देन 5 हूँ एभापोरेशन एभापोरेशन आम क्या कहवा जस्ट माने एभापोरेट कर दिया जो प्रोसेस आम एभापोरेट करदे आमको आमर एलिमेंट मिल जाओ फॉर एग्जांपल मनकर चीनी पानी कहवा लुण पानी कहवा तो से लिक्विड माने से मिक्सचर टाक वाटर अच्छी यहाँ माने मिक्सचर अच्छी आपको आम टेम्परेचर दबा तो टेम्परेचर देले तो ये एभापोरेट हो वाटरटा एभापोरेट हो आमर वाटरटा एभापोरेट हो तो आमर कौन यहाँ से ये बसीज से हूँ सल्ट बा सल्ट और सुगार तो आफ्टर एभापोरेशन हो सारा पर जोटा रही से हूँ एलिमेंट गोटे वाटरटा एभापोरेट हूँ आम एलिमेंट गाइस थैंक यू नेक्स्ट क्लास बी प्रोवाइड माने कंटिन्यू